लास्ट 3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया एंड जो मेरी फ़िलहाल कंडीशन है, मुझे नहीं लग रहा कि कल भी वीडियो बना सकती हूँ, इसलिए आज मैंने टूटी फूटी आवाज़ में एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं लास्ट 3 दिन का और आज का भी टॉपिक कवर कर रही हूँ। तो बात करते हैं आज डे 3 की। डे 3 में मैं आपको बताने वाली थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CDSCO एंड स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? इंडिया की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को समझना, डिफ्रेंशिएट करना सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी और स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सेंट्रल के रूल्स क्या है, सेंट्रल के पास अथॉरिटी क्या है, स्टेट के पास क्या है। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ CDCO, DCGI, स्टेट FDA। दो CDCO के अंडर सब कुछ आता है, बट स्टेट FDA का काम, स्टेट FDA का एक फंक्शनिंग है, DCGI का एक खुद का फंक्शनिंग है, CDCO एक एंटायर टीम का एक अलग फंक्शन है। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ वेरियस जोनल एंड पोर्ट ऑफिसेस। आंसर UPSC क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्री का इंश्योर करना कि मेडिसिन आर अवेलेबल टू पब्लिक आर सेफ, इफेक्टिव एंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। Drug regulation in India follows a dual method. One is central government method and another is the state government. So that's why it is a dual method. Together they implement one thing, that is Drug and Cosmetic Act 1940 and Drug Rule 1945. Always remember, one act, one rule. One act is of 1940, one rule of 1945. Indian drug regulatory system. Again we are going on the same picture. Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Directorate of General and Health Services, Central Drug Standard Control Organization, Drug Controller General of India, that is the head of CDCO. Then comes as a headquarters, field formations, functional divisions, everything. Okay, so now we will check how it is. First is under Government of India, we will be having Ministry of Health and Family Welfare. So Ministry is the apex body which is responsible for national health policies, drug policies, public health programs, pharmaceutical legislation, medical education, health infrastructure. It supervises CDCO through the Directorate General of Health Services. So Ministry of Health and Family Welfare, which supervises CDCO under DGHS. Now we will speak about DGHS. DGHS provides technical guidance to the ministry. What it does: technical advisory body for public health administration, disease control, medical education and supervises CDCO. पहला लेवल था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री, देन उसको फंक्शनिंग के लिए डायरेक्टरेट ऑफ जनरल, देन इसका काम है CDCO को कंट्रोल करना. CDCO is India's national regulatory authority for pharmaceuticals, cosmetics and specified medical devices. Function under again DGHS and Ministry of Health because it is a dual regulatory system. Vision: to safeguard public health by ensuring drugs, cosmetic, medical devices available in India are safe, effective and of standard quality. Now functions of CDCO. CDCO is involved into new drug approval. Yes. So evaluate new drug, evaluate the fixed dose combination, evaluation of biological products. That's why new drug approval is done. I'll explain in a better way. First time now Mounjaro come. So evaluation of Mounjaro is a new drug. So evaluation of it. Fixed dose combinations like metformin
40 mg, metformin 1000 mg, sitagliptin 50 mg, metformin 500 mg, sitagliptin still 50 mg. How these doses and biological products, some monoclonal antibodies, some insulin, like how they will be ruling into India. Clinical trials. If new medicine is coming, new drug product is coming, then their permissions, monitor, then ethicals needs to be checked. That is coming under clinical trials. Next is import regulation. What are the drugs are coming under import registration, import licenses, if it is a very special import case, foreign manufacturer inspections, medical devices, approval, licensing, monitoring, cosmetics, import regulation, quality standard, pharmacovigilance, advanced drug reaction monitoring, risk management, national coordination all state drug control authorities, because under state all the state FDAs come. So all state drug control authorities will report to CDCO. Now CDCO is ruled by head, and the head is CDCO, who has a responsibility: approval of new drug, permission for clinical trial, regulation of medical devices, coordination with FDAs, state FDAs, issue regulatory guidance, oversee vaccine approval, represent India internationally. This question always become a tricky. DCGI is not the head of ministry. DCGI is the head of CDCO. Now CDCO. Under CDCO, DCGI, below DCGI there is an additional drug controller. Before that, joint drug controller, deputy, assistant and drug inspector. Let's read it in another way. पहला इंसान बनता है ड्रग इंस्पेक्टर. ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद तुम बनोगे ड्रग इंस्पेक्टर. तुम्हारा प्रमोशन होगा तो तुम बनोगे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर. उसके बाद के प्रमोशन में तुम बनोगे डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, फिर तुम बनोगे जॉइंट ड्रग कंट्रोलर, फिर तुम बनोगे एडिशनल ड्रग कंट्रोलर, एंड देन तुम बन सकते हो DCGI. अब जोनल ऑफिसेस. तो जोनल ऑफिसेस का काम क्या होता है? GMP इंस्पेक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन चेक करना, इन्वेस्टिगेशन, मार्केट सर्वाइवल. जोनल ऑफिसेस कौन से हैं? मुंबई जोनल ऑफिस है, अहमदाबाद है, चेन्नई, हैदराबाद है, कोलकाता, गाज़ियाबाद. जोनल के बाद पोर्ट ऑफिसेस. पोर्ट्स पे क्या आता है? इम्पोर्टेड ड्रग मोस्टली. सो इंस्पेक्शन ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. सो एक्टिविटीज़ इनके अंडर import sample collection, document verification, clearance, quality check. Major ports: Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi. So next is central drug testing laboratories. Function is drug analysis, quality testing, standard verification, expert opinion. Examples: Kolkata, Mumbai, Chennai and Ghaziabad. State Drug Control Department. Every state and union territory has its own drug control administration responsible for manufacturing licenses, retail licenses, wholesale licenses, local inspection and market surveillance. State Licensing Authority. इसका काम क्या होता है? Issue manufacturing licenses, issue sell licenses, renewal, cancellation and enforcement. Now under State Licensing Authority, there is one person called as a drug inspector. It's a field level regulatory officer. So as a drug inspector, you need to go at factory for inspection, you need to collect the sample, you need to do the investigation, GMP verification, seize, prosecution and documentation. Central, and let's read the state. Central comes as a CDCO. CDCO का काम होता है न्यू ड्रग का अप्रूवल करवाना, इंपोर्ट का लाइसेंस देना, क्लिनिकल ट्रायल्स करवाना, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल देना, मेडिकल डिवाइसेस के लिए अप्रूवल देना, नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना. स्टेट FDA का काम है रिटेल लाइसेंस, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग, लोकल इंस्पेक्शन करना, मार्केट सर्वाइलेंस रीड करना. दैट्स इट. दैट्स द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे.
आज के टॉपिक में MCQs मैंने इन्वॉल्व नहीं किए हैं, इसका एक अलग से PDF शेयर कर दूँगी। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है डे 4 का, दैट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मुझे पता है DNC एक्ट क्या होता है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बट उतना डिटेल में नहीं था, तो आज मैं उतने ही डिटेल में करने वाली हूँ। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, अंडरस्टैंड द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, understand the importance of drug regulation. Drug and Cosmetic Act 1940 is the principal legislation governing the import, manufacture, distribution, sale and quality control of drugs and cosmetic in India. It provides legal framework to ensure the medicines available to public are safe, effective and that of standard quality. Without this act, इस एक्ट के पहले कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं था जो कंट्रोल करता था मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ मेडिसिन। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ रिस्क फॉर काउंटरफीट, अडल्ट्रेटेड, अनसेफ मेडिसिन। सो व्हाई एक्ट वाज केम, अगर तुमको याद हो, एक कमेटी थी, चोपड़ा कमेटी, अंडर लेफ्टिनेंट कर्नल चोपड़ा, तो उनका काम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ऐसी उनका एक काम था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए थी जो रेगुलेट करे ड्रग्स को, तो दैट्स व्हाट लॉ रहना चाहिए जो सेफ ड्रग्स को मार्केट में लेकर आए, तो दैट्स व्हाट ओवरऑल द पॉइंट्स। का इवोल्यूशन पढ़ते 1930 में चोपड़ा कमेटी, 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, 1945 ड्रग रूल्स, 1962 ग्लोबल ड्रग सेफ्टी के कंसर्न्स हुए थे, लाइक थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हो गई थी, 1986 CDCO, 2005 प्रोडक्ट पेटेंट रेजिमेन, 2017 न्यू रूल फॉर मेडिकल डिवाइसेस एंड 19 देयर वाज अ न्यू रूल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड न्यू ड्रग्स एज वेल। Objectives, primary objective is public health protection. That's important, that every individual who staying in India should receive a safe, qualitative and effective medicine. Prevent adulteration, there should not be any contamination to the drugs which are provided to Indian citizens. Prevent spurious drugs, again prevent. Regulate the manufacturing, wherever the manufacturing is occurring it should be in approved conditions. Regulate sales, medicines should be sold through the licensed establishment. Regulation of import, if any product is coming to India then it has to be a standard quality one, substandard level should not be allowed to import it. Ensure standard quality, always there should be followers of pharmaceutical standards. Scope of the act regulate import, manufacture, distribution, sale, stocks, exhibition for a sale and QC. Drugs, cosmetic, medical devices, biological products, vaccines and blood products. कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू डेफिनेशन है, इम्पोर्ट है, मैन्युफैक्चर, लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज एंड एडवाइजरी बोर्ड्स। द एक्ट फॉलोज प्रिवेंटिव अप्रोच rather than reactive one. So act is always there to prevent people, but it also has the things if anything or any person goes for a violation of the act. So it prevent unsafe medicines entry, violation avoided, legal action and consumer protection. Drug inspector, he can enter now under premises, facility, sample collection, and prosecution, but it was not possible if the act was not there. That's why it is important for the drug and inspector that they should follow Drug and Cosmetic Act 1940. Stakeholders who are there
manufacturer, importers, exporters, distributor, retails, hospital, testings, regulatory authority and consumers. Relationship, Pharmacy Act, regulation, pharmacy, drug and magic, advertisement, NDPS, narcotics, medical devices, regulation, medical devices, new drugs, clinical research and approvals. Common misconception, the पहला misconception, act regulates only medicines, so cosmetics, medical devices all free. No, it controls medical devices, cosmetics and even now biological and other products. CDCO enforces the act. No, it is a dual regulatory system, so that's why CDCO as well as stricter control. Myth 3, every medicine requires approval from DCGI. It's partly correct, it's partly incorrect as well, because central government as well as state authorities involved depending upon the type of product and active. Now this is finished. Now chapter 5. So chapter 4 is again related to all the entire organization body. Now it is related to act. We will first read few parts of the act. So there is section 3. Section 3 deals with definition of the Drug and Cosmetic Act. So what are the other conditions? We will definitions. So section 3 causes a definition. So a drug inspector cannot correctly apply the law unless it is defined into the act. I have mentioned one point. UPSC friendly frequently ask definition based MCQs because they test conceptual clarity. So this related definition questions will be there. Section 3 provides legal definitions for important terms used throughout the act. Definitions are binding and may differ from everyday usage. Drug includes medicines intended, substances intended to affect the structure, components used in the manufacturing of drug, medical devices notified. Okay, I'll explain you in another. Medicines intended for an internal or external use in a human or animals. सबने अगर किसी को हेड सर दर्द हुआ है तो झंडू बाम यूज़ किया है, कोई बाम यूज़ किया है, so that also comes under medicine. Second, अगर आपने कभी भी कोई भी टैबलेट ली है जिससे आपको क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई डिसीज़ प्रिवेंट हो रहा है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर ड्रग. पोलियो डोज लिया था, याद है, क्योंकि हम प्रिवेंट करते हैं कि वो डिसीज़ हमें हो ना. दैट्स व्हाट इट इज़, ड्रग. इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कीमो ट्रीटमेंट. कीमो में बहुत सारे ड्रग्स की वजह से हेयर निकल जाते हैं बॉडी में और पेशेंट पतला सा हो जाता है, तो बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे इफेक्ट करने वाले ड्रग्स को बोला जाता है, सब्सटेंसेस को भी बोला जाता है ड्रग्स. कंपोनेंट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जब ड्रग्स के बारे में बोला गया तो सबको लगा कि जो एक्टिव कंपोनेंट है वही नहीं. अगर टैबलेट के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ होते हैं वो भी अंडर ड्रग आ जाते हैं, एंड जो एम्प्टी कैप्सूल शेल्स है वो सब कुछ आ जाता है. सर्टन मेडिकल डिवाइसेस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मेडिकल डिवाइसेस में कुछ डिवाइस होते हैं लाइक कॉपर-टी होता है. कॉपर-टी जो फीमेल बॉडी इंट्रासेप्टिव्स में यूज़ किया जाता है, तो दैट गोज डायरेक्टली इनटू योर बॉडी कॉन्टैक्ट. बट वहीं पर प्रेगनेंसी किट में जस्ट वन यूरिन ड्रॉप, इट इज़ नॉट इन direct contact with your body, it is coming with the body fluid. But so that's why few medical devices are controlling by drug definition. But product can legally be drug even if it is not a tablet or a injection. So that's why it is very broad definition. It can be a drug even if it is not a tablet, injection. Paracetamol tablet is a drug, but food is not a drug.
Cloths not drug, but insulin injection is a drug. Antibiotic syrup again drug. Coronary stents, these are the medical devices. Empty heart gelatin capsules again drug. Furniture is not a drug. Cosmetic is something that has to be rubbed, poured, sprinkled, sprayed, introduced or otherwise applied to human body for cleaning, beautification, promoting attractiveness, appearance alteration, include components of cosmetic product. फेस वॉश यूज़ करते हो, दैट इज़ अ क्लींजिंग. ब्यूटिफिकेशन, मेकअप जो मटेरियल होता है वो प्रमोट अट्रैक्टिवनेस. इसके लिए मैं बोलूँगी अगेन मेकअप अल्टरिंग अपीयरेंसेस. कुछ पिंपल हाइडिंग क्रीम्स आ जाती है, दैट्स समहाउ अल्टरिंग अपीयरेंसेस. इट ऑल्सो इंक्लूड कंपोनेंट एंड ऑल दोज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है जोजोबा ऑयल हो गया या फिर पैंटेथोनिक एसिड हो गया, नियासिनामाइड, दिस आर ऑल्सो कॉस्मेटिक्स. एग्जाम्पल लिपस्टिक, शैम्पू, फेस क्रीम, नेल पॉलिश, परफ्यूम. थेरेपेटिक ऑइंटमेंट्स नहीं, एंटीबायोटिक क्रीम नहीं, मेडिकेटेड शैम्पूज जिसमें कीटोकिनाजोल का शैम्पू आ जाता है तो वो नहीं, दैट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक, इट इज़ अ ड्रग. डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड कॉस्मेटिक. Prevents or treat diseases. Therapeutic purpose may require prescription, regulated for efficacy and safety, mainly for safety and quality. And that are OTC, but this require prescription. Manufacture. Now who is a manufacturer? Manufacturer is the one who includes process of make, alter, ornament, finish, packing, labeling, breaking, repack and sell for a distribution. That activities include tablet compression, capsule filling, sterile filling, packaging, repacking, labeling. Patent or proprietary medicines. A patent or proprietary medicine is a generally formulation that is not included in official pharmacopoeia and marketed under brand name subject to legal provisions applicable to different systems of medicine. For example, एक न्यू ड्रग मार्केट में आया दैट इज़ नॉट येट ऑफिशियल इन एनी फार्माकोपिया बट इट इज़ गुड फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, so that is protected and that protected by patent. So that's why patent and proprietary medicines are also used once the patent law are differ, like it is allowed or it's some relaxation are given. Ayurvedic, Siddha and Unani, this comes under the traditional systems of medicine. So Chyawanprash, Ashwagandha, all these are coming under Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. Misbranded is very easy concept. Color coated powder or polish in the same way, but it is not same in a quality of the product. So some product label as 100% label, but it contains synthetic components. Still it is a misbrand. Adulteration is somehow intentionally done. May be considered adulterated if contains any substance prepared, packed or during storage under conditions. Example, injectable product contaminated due to poor aseptic manufacturing practices. इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. बहुत टाइम पहले ना एक नेस्ले का केस हुआ था. नेस्ले के प्रोडक्ट्स में जो मैगी है उसमें कुछ फंगल ग्रोथ दिखा था. दैट वाज अ अडल्ट्रेशन बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, स्टोरेज और समथिंग, दैट्स व्हाई इट वाज अ अडल्ट्रेटेड. बट नेक्स्ट जो क्लास आ रहा है उसका भी सेम एग्जांपल बताऊंगी मैं. बट पहले स्पूरियस ड्रग्स आर कंसिडर्ड एज अ स्पूरियस इफ इट इज डन इंटेंशनली. Adulterated is not intentional, but spurious is something intentional. Imitates another drug, bear the name of fictitious manufacturer, falsely claims, like क्रोसिन ही नाम होगा बट वो क्रोसिन के अंदर है ना कुछ फॉन्ट अलग चेंज किया रहेगा, कुछ चेंजेस किए रहेंगे, बट वो क्रोसिन पैरासीटामोल 500 ना होके कुछ लो क्वालिटी रहे या उसके अंदर पैरासीटामोल ही ना हो, दैट इज़ अ स्पूरियस. इसका एग्जांपल सेम मैगी के प्रोडक्ट.
मैगी के प्रोडक्ट में कुछ इम्प्यूरिटीज़ मिले एंड दैट वाज अ हजार्डस, सो दैट वाज अ स्पूरियस. So spurious is always something done intentionally hidden, but adulteration intentionally as well as non-intentional. Like during the storage for 10 months, 12 months, suddenly the wheat flour or some that maida, all those things grow fungals. So that is the adulteration. Both are not good for a health. So this is what the comparison. So when inspector goes, so as per the inspector perspective, they has to check whether the product fit into legal definition, manufacture facility, licensing, labels are done, adulteration or counterfeit to be checked, and storage conditions. That's it, done. Now the last is day 6. Standard quality, misbranded, adulterated and spurious drugs. So स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, तो उसके पहले पढ़ते हैं वाई ड्रग क्वालिटी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए. दैट्स वे वी आर इंश्योरिंग द प्रोडक्ट इज सेफ, इफेक्टिव, प्योर, कंसिस्टेंट एंड इट इज़ प्रॉपरली लेबल्ड. बिकॉज मिसब्रांडेड it is not allowed. Medicine that fail this requirement can cause a treatment failure, drug resistance, toxicity, death and loss of public confidence. Section 16. Section 3 gives a definition. Section 22 explains about drug inspector. Section 16 explains about standard quality. If it complies with the standards as per the DNC Act, then it comes under section 16 as a standard quality drug. Standard quality, it has to be identified, assay has to be performed, purity, dissolution, sterility, uniformity, pH and microbial limits, whichever is applicable. That's most important, because for injections you cannot do the dissolution, but for tablet or capsule dissolution is important. If something is not of standard quality, then how? Because it fails to meet the standard conditions, then it is a not of standard quality. Reason, it will be a low assay, high impurity, failed dissolution, failed sterility, incorrect pH, poor uniformity and other conditions. Reasons, potency कम है. For example, if we say that drugs should be 100% but it is a 98%, so those 2% what will be the impurity or something, so that is why it is a low potent. Excess impurities allowed is 0.1% but it is having 0.5%, so that's what it is not of a good standard. Poor dissolution, tablet should dissolve 80% in 15 minutes but tablet remains same for a almost 60% dissolution in 15 minutes, so it is a poor dissolution. Sterility failure. For injectables sterility is important. They should be a sterile because it is coming directly into the body fluid. Packaging defect, if any tablet or anything is packing material is tampered, then what will happen, the moisture will go inside the tablet or capsule, whatever the dosage form, it will be swollen. Stability, drug degradation. Now misbranded drugs come under section 17. Section 16 defines about standard quality, section 17 defines about misbranded. So misbranded is missing something in the presentation or labeling, so that's how it is misbranded. Characteristics of misbranding: wrong information, incomplete, misleading, improper packaging and concealed defect. Adulterated, section 17A. I'll give you best way. Misbranded, MA and S. Remember, mass. M for 17, A for adulterated 17A, and spurious is for 17B. So adulteration means uncontamination, may be intentional or unintentional. Sometimes because of improper storage,
then it is a unintentional. But when it is a pure GMP, toxic raw material, pest infection, then it is a intentional, unintentional. Spurious drugs. Drug becomes spurious when it is a fake or falsely represented. Fake name, fake batch number, duplicate packaging, false identity. So you can check what are the components and everything. Inspector, he needs to check. So for everything he needs to check licensing, compliance, storage condition, batch record, raw material, traceability, market compliance. So all the MCQ part I'll do later because I cannot do it today. And the last part is this one, that is we all need to say thank you to Kranz Health. Now I request everyone to pay only 49 rupees if you want the MCQs. So I covered today 24 topics. So for topic 20 MCQs. So that is a 80 and plus revision. So almost 100 MCQs are provided. So please give 49 rupees and take it. Thank you. This is a MCQ PDF you will receive. All the answers are marked, so you won't be having an issue. Okay. So, and the cost is only easiest way. It is only 49 rupees. So please contact and get back to us.